Hi everyone. In this module, we will discuss edge or fog computing. It's a recently emerged paradigm. It has mainly emerged due to the amalgamation of cloud computing and Internet of Things. Both edge and fog computing are commonly used interchangeably, but there is some distinction between them. So let's start and explore the topic. If we see the evolution of internet devices, so we already know this because we have seen these type of infographics before as well. That there has been a huge increase and a very rapid and sharp increase in the number of internet devices, other devices which are connected to the internet over the past 20-30 years. So if we see in 1992, there were around a million internet connected devices, which became around half a billion in 2003. तो वो काफी ज्यादा उसमें इजाफा हुआ. Then in 2008, the concept of IoT was evolved. 2008 concept आया था और इसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा तेजी से कनेक्ट होनी शुरू हो गई बिकॉज बिफोर दिस कॉन्सेप्ट generally the devices who were connected to the internet they were typically computers or computational devices or smartphones or these type of small devices लेकिन computation devices so इसने इस रेट को और ज़्यादा तेज कर दिया and in 2013 there were around 11.2 billion devices जो कि 14 में तकरीबन 14 billion हो गई हैं, then 18 billion, 22 billion, and right now they are around 50 billion internet devices. और इनका एप्लीकेशन जो है वो भी बढ़ती गई. So in the early days there were more servers and desktop computers, then laptops connected, then uh, smart devices were brought to आपकी फ्रिजेज और स्मार्ट वॉचेज आने शुरू हो गई. देन आपके हॉब्स कनेक्ट होने शुरू हो गए, आपकी मिल्स जो है विंड मिल्स वो कनेक्ट हो गई, ट्रैफिक लाइट्स कनेक्ट होनी शुरू हो गई करते करते. देन योर सॉकेट्स एंड now probably you're having even your door locks connected. So we have now internet connectivity across devices. तो बहुत ज्यादा types of devices के साथ हमारी connectivity. So if we see the cloud computing and IoT landscape, we can see there are variety of IoT devices like mobile phone. We do have surveillance cameras. We have IP telephony. We do have internet towers. We have HVACs. We have webcams. We have cars. We have traffic lights. So we have typically computers, laptops, etc. So we do have a lot of IoT devices or devices which are connected to the cloud. ठीक है, ये एक typical scenario. और क्लाउड की इमरजेंस के बाद क्या हुआ कि जी जिस तरह हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, in the early days the computation was more centralized, then it became more distributed. तो वो end computers के ऊपर जाने शुरू हो गए. But the cloud computing again brought this computation back onto the centralized devices. तो वो central उसके ऊपर आ गई वापस. तो ये सारे जो हैं ये डेटा कलेक्ट करके क्लाउड पे भेजते हैं और क्लाउड जो है इनको प्रोसेस करता है. So this is the cloud computing landscape along with that. But we needed fog computing. Why do we need it for computing? Because the problem was you cannot do each and everything in the cloud. It does not mean that the cloud does not have the capacity or the capability to do these type of things. The major problem is one of the major is cloud is quite far. Then there are other challenges as well. But one of the major issue is the cloud is far. The far means that there is going to be huge latency or large latency from these end devices to the cloud platform. Or the other side is instead of doing it into the cloud, why not to do it into these end devices? They have their own challenges, and major challenges are what they are generally energy constraints, space constraints, computation constraints, storage constraints, processing capability constraints. So they have a lot of constraints as well. So what we needed was to have this computation somewhere in the fog. So fog is what once the cloud they are brought
near to the earth or near to the edge. So that is called fog. तो उसी तरह से these devices are there, these sensors or these actuators or devices, they are there. So they cannot do this complex computation. So we have to do it over to the cloud. But the cloud is far, so why not to do it somewhere in between? तो यहाँ पे ये जो बीच का एरिया है कहीं पे, यहाँ पे why not to do it here, here, here? So near to the cloud or near to this edge. Okay, so this is the edge. So near to the edge, your network edge. यहाँ पे आप computation करें. So this whole ये जो आपको एक ये bluish ये नजर आ रहा है. So this spectrum is showing you fog computing that you are doing computation somewhere here. So fog computing is in fact a model in which you do computation somewhere in between the end device and the cloud platform. So that is called a fog computing. And what is the major objective? Major objective is कि वो जो इस device की computation capability है और जो बाकी constraint है, इनसे थोड़ी सी बेहतर smart और बेहतर capability की device है या कोई computing node है, which has the capability to perform some tasks. So वो ये task कर लेता है and so इसकी वो कमजोरी जो है वो भी खत्म हो जाती है, जो है कि आपकी constraints हैं resources की, and जो इसकी limitation है that is the distance and the latency it possess. तो वो latency जो है वो कम हो जाती है. So it reduces the latency and brings some computation power to the end devices. ये major advantage होता है आपका for computing. Use case example है a very good and a very typical example. It's a smart traffic light system. It's been now incorporated in the West as well. और smart जो traffic light system है इसमें क्या होता है कि you do have a traffic light system जिसके अंदर आप जो vehicles हैं आपका जो traffic light का system है they are interconnected at least and you can have a multi levels of these type of systems. उसमें बेसिक लेवल पर ये है कि एटलीस्ट जो आपको ट्रैफिक लाइट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर और दे आर मॉनिटरिंग द ट्रैफिक, they are monitoring the pedestrians as well, and they are doing computation to control the traffic lights and managing the traffic as well. So इस STL के अंदर they do have sensors और ये sensors करते क्या हैं, they measure the distance and speed of approaching vehicles from every direction. So they see them और उसकी बेसिस के ऊपर वो देखते हैं कि स्पीड क्या है किसी भी व्हीकल की और डिस्टेंस कितना है, and they also see the obstacles as well like pedestrians or other vehicles as well जो कि दूसरी स्ट्रीट से आ रही है. So what is the issue or what you can do is you can even issue the slowdown warnings to the vehicles or you can change the traffic light durations. तो इस तरह के मल्टीपल किस्म के आप काम कर सकते हैं. So ये जो smart traffic light system, it has three major goals. The first one and a very important goal is to have accident prevention, to avoid the accidents. जो कि आपको पता है ज़्यादातर जो है वो signals के ऊपर ही accidents बहुत ज़्यादा होते हैं. And then maintenance of a steady flow of traffic. This is a very important thing कि आपका जो traffic का flow है वो steady रहे. Because you might have seen on the traffic signals that they have predefined time for different lights or for different sites, but it's generally not adaptive. अगर ये adaptive हो तो that can be more fruitful. Adaptive वो कैसे होगा if it has the capability to monitor the traffic कि किस साइड से कितनी ट्रैफिक आ रही है उसकी बेसिस के ऊपर ये जो उनका ओपनिंग एंड क्लोजर टाइम है that can be made quite adaptive के उसको चेंज किया जा सकता है. And then for better traffic management, road management, and new projects, you can collect relevant data. कि वो traffic का data आप collect कर रहे हैं और उसकी basis के ऊपर you can even improve the traffic system. अब ये जो multiple goals हैं, they have different response time in terms of computation. If you see this one, the first one, accident prevention, it has a real-time reaction time. Because if let's say there is a car coming from one side and there is a pedestrian who suddenly comes onto the road, तो अब उसका जो response time होगा it needs to be really real time कि वो फौरन से उस कार को इंडिकेट कर दे या ट्रैफिक सिग्नल जो है उसको चेंज कर दे or ring an alarm or something to alert the pedestrian as well. So इस तरह के multiple उसके responses हो सकते हैं but they need to be done in real time.
और वो रियल टाइम में कब होंगे, बिकॉज द डेटा इज बीन कलेक्टेड एट द ट्रैफिक सिग्नल और एट दैट प्लेस, वो जो एंड नोड है, and all this data is being gathered and sent to the cloud, somewhere centralized cloud, maybe one cloud in the country or maybe two three cloud platform. तो अब ये जो भी है उनके ऊपर भेजना है, तो the problem is in general cloud is not very good for real time, और ये वाला जो इसके अंदर you need to have a very very quick response time. तो वो जो quick response time है उसके लिए you need to have a real time reaction. जो गोल टू है जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि ट्रैफिक फ्लो जो है वो स्टेडी रहे, आप उसको अडॉप्टिव भी कर दें, सो इट रिक्वायर्स अ नियर रियल टाइम क्वाइट क्विक, बट नॉट टू मच स्पॉन्टेनियस, ठीक है, वो चाहिए बड़ा क्विक। और जो तीसरा है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने कोई डिसीजंस करने हैं, कोई एनालिटिक्स होंगी, कोई ट्रेंड्स होंगे, कोई ग्राफिक्स होंगी, इस तरह की जो चीजें बननी है, यू आर नॉट इन अ हरी टू सी दिस डेटा, ठीक है, आपको शायद ये एक दिन बाद देखना है, एक घंटे बाद देखना है, या एक महीने बाद देखना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कलेक्ट दिस डेटा इनटू द क्लाउड, तो ये क्लाउड में सिर्फ जाए और बाद में क्लाउड से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थ्री गोल्स दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम। अब ये जो STLS है, जो आपको स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, इसकी कुछ की रिक्वायरमेंट्स, एक लोकल सब सिस्टम लेटेंसी है। अब वो लोकल सब सिस्टम क्या है, जो उस एक स्पेसिफिक एरिया का है, एक छोटे से एरिया में जो ट्रैफिक लाइट लगी है या कपल ऑफ लाइट्स लगी हैं, उनका जो वो जो एक सब सिस्टम है उसकी लेटेंसी है, एंड दैट शुड बी वेरी वेरी लेस। वो फॉर एग्जांपल इट शुड बी लेस देन 10 milliseconds. Then you may have a middleware orchestration platform, जो आपके ये जो लोकल सब सिस्टम जिसे एक मेन मिडलवेयर या सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा, जहां से सारी चीजें जो हैं वो ऑर्केस्ट्रेट या प्रोवोक हो रही हैं और इस सारे को हैंडल कर रही हैं, उसका टाइम। देन नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, जो फॉग नोड्स जो जो बिलोंग करेंगे कोई भी एक मॉड्यूलर कंपोनेंट या स्टोरेज डिवाइसेस को कंसिस्ट करते हुए होंगे। अब फॉग नोड कहाँ होगा, फॉग नोड में भी एक वन ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो बन रहा है, एक जो लोकल सब सिस्टम है उसका होगा, ठीक है। तो एक एरिया में लेट से एक चौक है, उसके ऊपर कोई 6-7 ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है मल्टीपल, उसको डायरेक्शंस के लिए और पेडेस्ट्रियंस को उनको देखने के लिए, लॉट ऑफ सेंसर्स देयर। तो उनके लिए एक कोई प्रॉब्ली आपने एक शायद फॉग नोड लगाया हो, या ये भी हो सकता है 2-3 चौकों का इकट्ठे लगा। Then interplay with the cloud, whatever data you are collecting, you are going to inject or send this data to the cloud, और वहां पे जाके आप इसको स्टोर करेंगे, and later on you are going to do the analysis onto this data. Then you are having data coming from so many points. तो आपका एक जो centralized traffic light monitoring system है, उसमें data जो multiple sites से आ रहा होगा, so you are going to aggregate this data with some consistency. So you need to have a consistency of this highly geographically distributed system. ठीक है, तो वो geographically distributed होगा, multiple locations होगा, जैसे एक signal उससे आगे next signal होगा, so the both signals they are sending the data even for the same traffic, for the same vehicles as well. तो ये चीज भी हो रही होगी। Then if there is multi tenancy as well, आपका ये multiple tenants के दरमियान में शेयर हो रहा है, so you need to provide guaranteed service as well। ये नहीं हो सकता खास तौर से अगर fog के ऊपर आप you are adopting the fog because of real time reactions, and the service guarantee is not there, so this is going to create serious problems, because वो इसीलिए आपने चूज किया कि लेटेंसी का इशू ना हो और आपका जो रियल टाइम रिस्पॉन्स है वो मिल सके। And then multiplicity of provider भी हो सकती है। So if you are moving across multiple platforms, let's say your car is communicating with these traffic systems, and the car is moving across multiple platforms, तो क्या होगा कि उनके multiple providers हो सकते हैं। इसी तरह जो कार itself है, multiple types की cars होंगी, एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम के साथ भी जब वो गुजर रही होंगी, तो their providers are probably going to be different as well. So it brings a very complex situation. की एट्रीब्यूट, तो इस सारे सिनेरियो में जो मेन चीज है वो अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज दिस थिंग, यदि वी नीड फॉग कंप्यूटिंग, और वो फॉग कंप्यूटिंग होगी कहाँ पे, इट नीड्स टू बी डन समवेयर नियर टू दैट ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ठीक है। वो कंप्यूटिंग जो है वो हमने
उसके करीब करनी है, और वो जो कंप्यूटिंग करनी है दैट इज कॉल्ड अ फॉग कंप्यूटिंग, ठीक है। और जब उसको हम बिल्कुल ओवर द एज ऑफ द नेटवर्क करते हैं तो दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। तो एज जो है वो फॉग में भी आ जाती है, एंड देन फॉग कैन बी डन समवेयर इन बिटवीन एज वेल, वो आप इवन मल्टी लेवल्स भी आपके हो सकते हैं। सो की एट्रीब्यूट्स क्या हैं फॉग कंप्यूटिंग के? वो आपके जो डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द क्लाउड इज कि कैसी एप्लीकेशन में आप यूज करते हैं फॉग कंप्यूटिंग। इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर द एप्लीकेशन व्हिच रिक्वायर्स a very low latency and also a very predictable latency. Because especially in the cases where we need to have a real-time response, you need to have a predictable latency. Because the real-time systems, as you know, they are those systems which has to respond on time. So on-time response की वजह से they need to have a very predictable latency. तो उनकी computation plus latency अगर predictable होगी तो वो better perform कर सकेंगे. And obviously it needs to be very low. And then generally they are geographically distributed applications, like these traffic light systems, so which are geographically dispersed across your city or cities as well, or your pipeline monitoring, like you are having some pipelines, for example, like for oil, for water, or for others. So you are monitoring them as well. So they are geographically distributed. Or railway system, rail tracks. So all of them they are geographically distributed. Then you do have fast mobile applications like smart connected vehicles, the applications which are really moving and which are changing their hops as well. So changing their terminal connected terminals as well, like even the cars, rails, smart connected vehicles, and then large scale distributed control systems, like the system we discussed, STLS, smart cities, smart grids, etc. This also brings a new twist to the big data as well. Because of the IoT, IoT वैसे big data में जो हम बात करते हैं, so big data में हमारी जो बात होती है volume, velocity, and veracity के हवाले से. So this brings a new thing as well, that is geo distribution, जो आपकी geographically distributed होती है, वो वाला challenge भी आता है. So geo distribution, it's a new challenge or a new dimension of big data created because of this IoT and cloud computing merging stuff. Created for computing. तो तीन dimensions हैं big data की, volume, velocity and variety. तो volume आपको पता है क्या होता है, the amount of data, and velocity the speed at which the data travels, and variety is the differentiation in different data formats or जिस तरीके से आपको multiple data types हैं, they are variety. But this IoT, this brings new challenges because the use cases that we are discussing, particularly in the context of this fog computing, they are bringing new things like STLC or STLS, or connected rails and pipeline monitoring, and they are all geographically distributed. So the fourth dimension is what the geo distribution. Once there is geo distribution, and there are a lot of data being collected, even for the same items, because the things they are even moving as well. There is mobile computation, and the things which are collecting the data, they are mobile as well, and they are going to be connected with the other terminals as well. So the data consistency or the distribution, that is very important. Or one of the major challenges what you have to manage a lot of sensors. So IoT is consist of sensors, and a lot of sensors, and maybe actuators as well, or they are but geographically distributed. So this brings a challenge, and this brings an idea to move the processing closer to the data rather than sending the data every time to the cloud. So this also calls for moving the processing to the data. The terminals are things which are collecting the data, means the sensors or the actuators who are collecting this data. We are going to do the processing near to them. Okay, on to them or near to them. So typically they are sensors, so it is not process, but we may do the computation near to them. It can be on a mobile phone, like mobile phone with the camera, this is a sensor. And if you're doing a computation onto the mobile phone, so you are doing it near to the sensor. So we need to have a distributed intelligent platform at the edge,
which is typically a fog computing platform, जो कि इस सारी चीज को फिर मैनेज करेगा, उसके सारे एस्पेक्ट को। और वो मेजर एस्पेक्ट होते क्या है, वो उसकी कंप्यूटेशन करना और डेटा को स्टोर करना और उसको कम्युनिकेट करना, तो नेटवर्किंग वो वाले एस्पेक्ट को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉग कंप्यूटिंग है क्या, देन विल सी मोबाइल एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउडलेट्स कैसे बनाते हैं। इफ यू सी दिस पैराडाइम, ये जो एक हमारा फॉग कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, मोबाइल एज कंप्यूटिंग का आया, क्लाउडलेट्स का आया। पहले मैं क्लाउडलेट बता दूं, क्लाउडलेट्स आर एक्चुअली the things which are helping for fog computing arrangement. Cloudlet क्या होती है? A small scale cloud, a very small cloud in a box, एक छोटा सा cloud जो कि आपका cloud type का काम करता है, which is a virtualized platform, which is going to be in a box, so it can be a server, ठीक है? But for the user, it's a cloud. So there are going to be many applications connected to this server, और वो जो है उसके ऊपर कंप्यूटेशन करेंगे। इसी के साथ दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो क्लाउड। ठीक है, तो माइक्रो क्लाउड भी सिमिलर ही है। माइक्रो क्लाउड जनरली क्लाउडलेट तो बहुत ही छोटे उसको कह देते हैं, ये बड़ा एक स्पेसिफिक इसका पूरा कॉन्सेप्ट था, व्हिच वाज डेवलप्ड बाय कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी सीएमयू, एंड तो उसको क्लाउडलेट कहते हैं। दे डिड एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर दैट एज वेल। और जो माइक्रो क्लाउड है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। सो माइक्रो क्लाउड आर्किटेक्चर या माइक्रो क्लाउड जो दैट इज अ स्मॉल स्केल क्लाउड, जो कि एक रैक, दो रैक, तीन रैक पर मुश्तमिल होता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये भी आया था कि क्लाउड इन कंटेनर का, तो कंटेनर के अंदर बना बनाया क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा और आप उस कंटेनर को कहीं भी रख के चला सकते हैं। वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, उसके अंदर कंटेनर्स होंगे, कंटेनर सॉरी रैक्स होंगे, रैक्स में सर्वर लगे होंगे, और साथ साथ पूरी कूलिंग भी, इक्विपमेंट कूलिंग और एनर्जी और वो सारा इक्विपमेंट साथ लगा होगा उसी कंटेनर के अंदर। सो यू कैन take that cloud mini data center from one place to another place. ठीक है, तो सबसे एक जो बड़ा मेजर काम हुआ है पिछले 15-20 सालों में, दैट इज इंटरनेट एंड टेलीकॉम कन्वर्जन्स। पहले जो था इंटरनेट, वो आपका जो ट्रेडिशनल मोबाइल टेलीफोनी है उसके थ्रू था। इट वाज मेनली थ्रू योर फिक्स्ड टेलीफोनी, या जो फिक्स्ड नेटवर्क्स होते थे उनके थ्रू हुआ करता था। पर इवेंचुअली they converged too much, और we got integrated networks जिसे हम फ्यूचर इंटरनेट कहते हैं। और इसमें हुआ क्या है कि we got evolution particularly from 3G 4G technologies, and now we are having 5G technology. I think last class में मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि there was a time, आज से 20-22 साल पहले, जो आपकी मोबाइल ट्रैफिक थी, that was more like 95% voice and 5% data only 20-22 साल पहले, and now it's reverse. It's 5% voice and 95% data, and with the emergence of 5G probably it will be even more. तो वो आपकी शायद almost virtually 100% जो है ना वो डेटा हो जाए, और very less will be voice, तो वो voice भी सारी ट्रांसमिट हो जाएगी over the डेटा। देन नई किस्म के हमारे सर्विसेज आ गई, एप्लीकेशन आ गई, कम्युनिकेशन पैराडाइम आ गई। जैसे एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा इवॉल्व हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, स्मार्ट सिटीज का, स्मार्ट एग्रीकल्चर का, स्मार्ट व्हीकल्स का, स्मार्ट a lot of smart things because of this internet of things. And then it brought a concept of machine to machine communication. Previously there were more and more human to machine communication and computer to computer communication. But now machines are there, computers are there, humans are there, so human to machine, human to computer, computer to machine, etc. So there is a lot of communication. Then a lot of content or media oriented communication, context aware communication. It's not been written in context aware के लिए users का जो context है उनके लिए इसकी communication, social network, और social network जो context aware के लिए बड़ा काम कर रहे होते हैं, they inspired a lot as well. Then now we got a concept of internet of everything. ठीक है, हर चीज जो है it's been connected to the internet. और इनमें बड़े जो मेजर जो आपके पिछले 10-12 सालों में जो कॉन्सेप्ट है, दे आर चेंजिंग इट रैपिडली। ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, फॉर एग्जांपल दे आर मेनी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल, बट मेन जो
contributor and they are cloud computing, that is Internet of Things. Then जो अब हम बात करें fog edge computing, mobile edge computing, cloudlets, micro cloud, etc. फिर हम जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आ गया कि पूरा नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड. इसी तरह अब with the emergence of virtualization, now we have network function virtualization concept as well. और फिर एक बहुत बड़ा रोल जो इन सबकी हार्नेसिंग में जो रोल जिस चीज का है, उनको एक कॉन्सेप्ट तो आते रहते थे, जिस चीज ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया दे इट्स द एडवांसमेंट इन वायरलेस टेक्नोलॉजी. जो हमारे 4G है, LTE टेक्नोलॉजी जो है हमारी, या LTE एडवांस जो है, वाईफाई हमारी है, इसी तरह नाउ वी आर हैविंग 5G टेक्नोलॉजी. तो दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन emergence of all. ट्रेंड्स अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें की यूजेज में इजाफा बहुत तेजी से हुआ है पिछले 10-12 सालों में. बहुत ज्यादा जो है कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ने दे हैव मूव टुवर्ड्स द क्लाउड. इंडिविजुअल्स भी हैं बट ऑर्गेनाइजेशंस इन पर्टिकुलरली दे मूव देयर लोकल डेटा सेंटर टू द क्लाउड और दे आर यूजिंग अ मिक्स्ड मॉडल जिसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड्स दोनों को यूज करते हैं. और लेकिन ये जो क्लाउड है ये हम जो अपने भी प्राइवेट चाहे प्राइवेट क्लाउड है अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पब्लिक क्लाउड है they take us towards the centralization. कि आपकी जो प्रोसेसिंग है स्टोरेज है इट्स बीइंग डन at some centralized locations. So एंड टर्मिनल्स या एंड नोड्स या जो एंड डिवाइसेस हैं वहां से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं एंड इट्स बीन प्रोसेस्ड इन सम सेंट्रलाइज्ड. और जो नई हमारी एडवांसमेंट्स हुई हैं लाइक आईओटी में या जो मोबिलिटी वाली डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल से मुराद ये मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल से मुराद एनी डिवाइस व्हिच इज मोबाइल व्हिच इज मूविंग व्हिच इज मतलब फिक्स्ड. सो they may be served better by the decentralized system as well. तो इस सारे को वजह से बड़ी मेजर अटेम्प्ट्स जो हैं वो हुई कि जी ये जो कंपटीशन है इट शुड बी मूव टुवर्ड्स दी नेटवर्क एज नियर टू द डिवाइस. तो डिवाइस के जो एंड डिवाइसेस हैं यहाँ पे कंपटीशन होती है उस तरफ इसको मूव कर दिया जाए. तो उसमें फिर हमारे कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए फॉग एज कंप्यूटिंग के, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, क्लाउडलेट्स, माइक्रो डेटा सेंटर, ये सारी चीजें जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं. तो अगर इनकी डेफिनेशन देखें ये सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और बड़ा मिक्स किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं. फॉग कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज इनिशियली कॉइन्ड बाय सिस्को की तरफ से 2011 में जब आया. सो दे सेड कि जी इट एक्सटेंड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग टू द एज ऑफ नेटवर्क. So fog computing is a computing paradigm which actually extends your existing cloud computing capabilities towards the edge of the network. और खास तौर से जो आपके वायरलेस नेटवर्क्स हैं for the internet of things. तो जो fog computing nodes हैं they are generally located much far away from the cloud data centers and they are located much near to the जो end nodes होते हैं. So they are typically located at the network edge but not necessarily. जो एज पे एग्जैक्टली लोकेटेड होते हैं उसी को हम एज कंप्यूटिंग करते हैं. जो बल्कि नेटवर्क एज पे कंप्यूटेशन हम करते हैं दैट इज टिपिकली टर्म्ड एज एज कंप्यूटिंग. और वो फॉग भी है, लेकिन फॉग उसके अलावा इन सेंट्रलाइज्ड भी कहीं बीच में भी हो सकती है. जैसे आपकी लेट्स से कनेक्टिविटी है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और यू डू सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशन अवर आपने कोई क्लाउड होस्टिंग की हुई है कहीं पे, लेट्स से यू डू इट ऑन Amazon एज वेल. अब आपकी एक डिवाइस है, घर में कैमरा लगा है, तो वो कैमरा जो है दैट इज योर एज डिवाइस. आपकी वो कंप्यूटेशन करता है इनटू योर राउटर. ठीक है, जो आपका राउटर है, जो घर में राउटर लगा हुआ है, वो सिर्फ राउटिंग का काम नहीं कर रहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है वो आपका कंप्यूटेशन भी करके दे रहा है. सो दिस राउटर इज एक्चुअली एन एज डिवाइस और एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और अ फॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये एज भी है फॉग कंप्यूटिंग बिकॉज इट्स एट द नेटवर्क एज. ठीक है, और इसके बाद आप इसको हो सकता है कि जो लेट्स से आप कनेक्टेड है वाई पीटीसीएल का जो डेटा सेंटर है वहां पे भी उन्होंने कैपेबिलिटी दे दी है कि जी अगर आपने कुछ इनिशियल प्रोसेसिंग करनी है बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू दैट पीटीसीएल नेटवर्क विद वन सिंगल हॉप, आप वन हॉप के बाद उससे कनेक्टेड हैं, तो वहां पे भी आप उस पर कंप्यूटेशन कर सकते हैं. दे आर गिविंग दिस कैपेबिलिटी
तो आप वहां भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो फॉग कंप्यूटिंग। ठीक है, इट्स नॉट प्रॉब्ली दी एज कंप्यूटिंग, क्योंकि एज पे नहीं है, लेकिन बाय इट्स फॉग। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें कि सारे का सारा फॉग है, जो क्लाउड और उसके बीच में कहीं भी कंप्यूटेशन करेंगे दैट इज फॉग, और जो एग्जैक्टली एज पे करेंगे दैट इज एज कंप्यूटिंग। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि व्हाई वी नीड द फॉग, बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस द लेटेंसी, सो द बेस्ट थिंग वुड बी टू डू दिस कंप्यूटेशन नियर और ऑन द नेटवर्क एज। ठीक है, नेटवर्क एज के ऊपर आप कंप्यूटेशन करें या नियर टू द नेटवर्क एज करें, so that would be beneficial because then you would be near to the end device. आप जब उसके करीब होंगे तो फिर लेटेंसी बहुत ज्यादा कम होगी, and that is going to be really beneficial. और दूसरा आ गया जी वही मोबाइल एज कंप्यूटिंग। द मोबाइल एज कंप्यूटिंग वाज डिफाइंड बाय etsi, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट है, और they give an industry specification. They are responsible for bringing the standards in the Europe, और 2014 में इन्होंने दिया। तो टिपिकली उसी तरह का है, बट व्हाट दे से दे टॉक इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मोबिलिटी। So they say that mobile edge computing pushes the cloud computing capability to the close to the radio access networks and 4G और 5G। ठीक है, क्योंकि अब वो वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस की बात होगी, मोबाइल की बात होगी, मोबिलिटी की बात होगी, तो इसलिए जैसे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटी को कहाँ ले जाती है, जो मोबाइल एज कंप्यूटिंग है, नियर टू दी रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, जो आपके मोबाइल टावर, एंड दिस हैज बिकम वेरी फेमस, और दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गेम चेंजर, कि बहुत ज्यादा इसकी जो यूजेज है वो शुरू हो जाएगी। ये वेस्ट में ये शुरू भी हो गया, आपको जो टेलको ऑपरेटर है, दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग माइक्रो क्लाउड्स, ठीक है, इनटू देयर जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स हैं, लेट्स से उनके जो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन के अंदर वो आपको फैसिलिटी दे देते हैं, तो सो दैट यू कैन हैव एज कंप्यूटिंग। क्लाउडलेट जैसे अभी मैंने बताया कि जी एक एक्चुअली दो तीन प्रोफेसर ने मिलकर बनाई थी, एंड इट वाज लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेड एट CMU 2013 में। सो इट्स अ मिडिल टियर ऑफ अ थ्री टियर हायरार्की, जिसमें आपका मोबाइल डिवाइस है, जो एंड डिवाइस है, ये हैव अ क्लाउड, और उसके बीच में क्लाउडलेट। तो इट्स अ डेटा सेंटर इन अ बॉक्स, तो एक छोटा सा सर्वर वो है जिसको वो कहते हैं डेटा सेंटर इन अ बॉक्स है। और माइक्रो डेटा सेंटर इज सिमिलर, और माइक्रो डेटा सेंटर में ये कि आपका जो बड़े डेटा सेंटर की बजाय एक छोटे स्केल पे डेटा सेंटर हो, जो शायद एक रैक में मिल जाए, या इस तरीके से ये मल्टीपल रैक्स हैं जो शायद एक कंटेनर में फिक्स हो सकती हैं, अलॉन्ग विद सम कूलिंग सिस्टम, तो उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। और अगेन वो कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, जैसे क्लाउडलेट जो है वो एक माइक्रो डेटा सेंटर ही है, ठीक है, और माइक्रो डेटा सेंटर की एक एग्जांपल क्लाउडलेट है। और इसी तरह जो मोबाइल एज कंप्यूटिंग है, दैट गिव्स यू फॉग कंप्यूटिंग एज वेल। तो ये सारे जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अब अगेन आगे चलते हैं फॉग एज कंप्यूटिंग के ऊपर। सो फॉग कंप्यूटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो हमने बात की कि जो ओरिजिनली इट वाज कॉइन्ड बाय सिस्को, और मेन जो मकसद था दैट वाज टू मेक द डेटा ट्रांसफर इजियर। फॉग मींस दैट क्लाउड इज क्लोजर टू द ग्राउंड, और फॉग कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली करती क्या है, आपके कंप्यूटेशन को नियर टू दी यूजर नेटवर्क से। अब किया क्या जाता है उसी तरह जैसा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। सो द सिमिलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन फॉग कंप्यूटिंग। सो फॉग कंप्यूटिंग जो एक वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म, और which are located between cloud data center and the end user devices, but it's not exactly in between. It's where it's been located, it's near to the end devices, ताकि आपकी latency जो है वो कम से कम हो सके, and it gives you very strong connectivity or support for the internet of things as well. मेनली जो है दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी जो है कुछ डिवाइसेज हैं एक सिस्टम के अंदर, वो एक फॉग नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, फिर दूसरे फॉग नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, फिर किसी और फॉग नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि लेट्स से आई हैव अ कार, और मेरी कार जो है वो इसी ट्रैफिक लाइट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो इफ आई एम मूविंग, तो वो एक तो मेरा ट्रैफिक लाइट सिस्टम चेंज हो रहा है, कार्स भी चेंज हो रहेंगे इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम के लिए। इसी तरह इफ इट इज कनेक्टेड टू लेट्स से मैं कंप्यूटेशन करता हूँ, और मेरी वो जो है ना रियल टाइम कंप्यूटेशन होती है, सर्वेलेंस सिस्टम है, मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया, मैं पुलिस की कार है, और पुलिस कार जो है वो सर्वेलेंस सिस्टम से मॉनिटर करते हुए उसको बेच दी जाती है, और वो जो मॉनिटरिंग हो रही है उस सर्वेलेंस का रियल टाइम में भी साथ साथ प्रोसेसिंग करनी होती है। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू द सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स ऑफ द पुलिस,
इट्स बीन फर्स्ट प्रोसेस्ड इन दी मोबाइल जो आपके टावर्स हैं उनके अंदर, जो आपके फॉग कंप्यूटिंग नोड्स या एज कंप्यूटिंग नोड्स लगे हैं वहां पे उसको प्रोसेस किया जाता है. So again, in this case, the car is moving. तो वो कार जो है अपना जो कंप्यूटिंग नोड है वो भी चेंज करे. ठीक है. So there is a lot of decentralization along with the mobility. ठीक है. तो decentralized है, मल्टीपल कार्स हैं, वो डेटा गैदर कर रही हैं, जो जिसको सस्पेक्ट किया है वो भी मूव कर रहा है. अगर मेरा फिक्स भी था कैमरा तो वो मूव कर रहा है. वो अभी एक कैमरे से डिटेक्ट हुआ, वो एक टावर से कनेक्टेड है मोबाइल से, फिर वो दूसरे जोन में गया, वहां से किसी और से कनेक्ट. इसी तरह जो डिवाइस है वो भी हो सकता है मूव करके, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी. सो देयर आर नंबर ऑफ सिनेरियो जिसकी वजह से इट्स हाईली डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है. और बिकॉज ऑफ दिस रीजंस द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इज हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. और बट यू नीड टू ब्रिंग हायर एफिशिएंसी. ठीक है. तो उस हायर एफिशिएंसी के लिए फिर क्या करेंगे? यू हैव टू transport lower amount of data to the cloud for processing and analytics. Rather than that, what you have to do, you have to process that thing near to the edge, okay, near to the cloud, so that you are going to have better efficiency, better security and compliance. आपके वो जो काम है वो पूरा हो सकता है. 2015 में एक कंसोर्शियम बना था ओपन फॉग, जिसका मकसद ये था कि फॉग, क्योंकि अगेन हमने बात की थी लास्ट टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि ओपन स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा वो उस तरह से नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या है? कंफर्मिटी का, इंटरऑपरेबिलिटी का. सो ओपन फॉग कंसोर्शियम वाज फॉर्म कि जी अब ये एक नई और डायमेंशन आ गई, नई पैराडाइम आ गई, तो अब फॉग प्लेटफॉर्म्स भी बनने शुरू हो जाएंगे. तो नाउ अगर आपने इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, so you need to have more and more standardized architectures. So this is one of the primary responsibility of this open fog consortium. So they have defined fog computing as a system level horizontal architecture which distribute resources and service of computing across multiple nodes. So it brings your this paradigm or this continuum from cloud to the things. ठीक है. कि वो जो cloud पे processing होती है जिसको आप लेके वापस इन things पे ले जाते हैं. So it's a horizontal architecture which supports multiple industry verticals. Industry verticals क्या है? कि जो multiple type की applications हैं. ठीक है. आपका जैसे अभी हमने कहा ट्रैफिक, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, रेल कनेक्टिविटी एंड रेल मॉनिटरिंग का सिस्टम हो सकता है, स्मार्ट सिटी हो सकता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. ठीक है. एंड देन क्लाउड टू थिंग कंटिन्यूम में क्या है कि आपका जो जितने भी सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस एंड डेटा, इट्स बीन लोकेटेड नियर टू दी थिंग्स. जो भी आपकी थिंग्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, व्हाटएवर इट इज, उसको उसके करीब में आपने कर दिया. So FC concept is a system level. It span between the things and the cloud. So वो कहीं भी हो सकता है, जो हमने बात की. It can be over the network edge. It can be across multiple protocols. ठीक है. वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी layers के ऊपर हो सकता है. So it's not necessary कि जी सिर्फ वो जो end-to-end system है उसके किसी एक पार्ट में होगा. ये भी हो सकता है कि जी मल्टीपल पार्ट में. तो जैसे भी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप उसको सेंस कर रहे हैं, लेट्स से वीडियो सर्वेलेंस को, और घर में मौजूद या ऑफिस में मौजूद या एक बिल्डिंग में मौजूद राउटर पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं. उसके बाद यू माइट बी प्रोसेसिंग इट ऑन टू सम सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स, लेट्स से पीजीसीएल के जिस तरह डेटा सेंटर बना दिया और वहां पे कर रहे हैं, एंड देन ऑन टू योर एक्चुअल. फॉग कंप्यूटिंग जो है वो इट परफॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नियर टू द एंड यूजर्स. तो अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, यू कैन सी कि आपका जो कोर है दैट इज क्लाउड, और देन यू गो टुवर्ड्स द एज. सो you can have fog devices and you can have eventually the edge devices as well. तो एक कार के अंदर मल्टीपल सेंसर हैं. This is the edge device, edge node, and it's sending the data to these foglets या fog devices के ऊपर, fog computing nodes के ऊपर. And variety of types of devices are there. You can have a computer, you can have surveillance cameras or dot cams or video cams, etc. और आप उससे डेटा जो कलेक्ट करके भेजते हैं. और इस सारे को जो है आप करते क्या है, इस सारे डेटा और इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी मैनेजमेंट है, मेजरमेंट्स हैं, कंट्रोल है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप कोशिश करते हैं rather than doing it over to the cloud, you do it over the fog.
ठीक है, तो आप इसको फॉग कर देते हैं ताकि it should be done near to the end user. ठीक है, so this is your free tier of फॉग कंप्यूटिंग जो है जैसे अभी कहा कि जी it focuses on processing efforts on the network end of the chain. ठीक है, लैन एंड आप कह सकते हैं, जैसे आपकी लैन है तो लैन का जो आपकी तरफ से एंड होगा उसके ऊपर आप करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह जो आपका पब्लिक नेटवर्क है उसके एंड पे, so this is generally one converging point. So you gather the data, you process and you store within a network. You use some sort of IoT gateway or a fog computing. ठीक है, तो ये सारे merged platform in one thing, generally you have this. और मल्टीपल टाइप्स के सेंसर्स से, मल्टीपल एजेस से ये डेटा और ये इंफॉर्मेशन गैदर होती है, और आप इसको इस IoT गेटवे या जो फॉग कंप्यूटिंग नोड है उसके अंदर आप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉग कंप्यूटिंग नोड है ये सारे को प्रोसेस करता है, और अगर कुछ डेटा ऐसा है जो कि परमानेंटली स्टोर करने वाला है तो उसको ये फर्दर एनालिटिक्स के लिए चाहिए तो उसको क्लाउड में भेज देता है, और अगर कोई रिस्पॉन्स बेस्ड डेटा वापस भेजना है तो उसको फिर डिवाइस को वापस भेज देता है, खासकर अगर आपके एक्चुएटर है उसको वापस भेजते हैं, सो दैट दे मे परफॉर्म द नेसेसरी एक्शंस. So fog computing, it actually gives a lot of power to to your devices, और मल्टीपल जो आपके सेंसर्स हैं वहां से आपको डेटा रिसीव हो जाता है, और इंफॉर्मेशन को वही आगे भेजता है जो कि नीडेड होती है. तो फॉग कंप्यूटिंग का एक बड़ा फायदा आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जो यूज नेटवर्क ट्रैफिक है यू कैन आल्सो रिड्यूस. चूंकि आप जैसे लेट से आपके एक सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है, एंड इफ इट इज डूइंग सर्वेलेंस एंड इट्स डूइंग anomaly detection as well. Anomaly detection की केस में not only it rings an alarm or does something, but what it's also doing is कि जब जिस वक्त वो जरूरत ना हो उस वक्त जो है उस डेटा को वो रिकॉर्ड ही ना करे. ठीक है, अब ये जिस तरह आजकल के सर्वेलेंस कैमरास के अंदर जो क्लाउड बेस्ड है, ये बड़ा कॉमन फीचर आता है कि वो स्टोर ही सिर्फ सारी चीजें स्टोर नहीं करते हर वक्त जब तक के कोई डिटेक्शन ना हो, द मोमेंट डिटेक्शन ना हो. ठीक है, तो वो देखते हैं जो मोमेंट डिटेक्ट हुई तो कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, अदरवाइज कैमरा जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा. ठीक है, तो इस तरह की काम आपका किया जा सकता है. FC जो है it's scalable because it's decentralized, so it gives a lot of data, or perform the processing and gives the data then to a centralized जो आपका cloud है उसको दे रहा होता है, and in itself it's quite decentralized, so it's highly scalable. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्केलेबिलिटी है इट्स लिमिटेड विद इन अ क्लाउड, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में उसका इंटरनली स्केलेबल होता है, लेकिन जो FC है वो इन टर्म्स ऑफ FC नोड्स जो है वो हाईली स्केलेबल होता है, आपके मल्टीपल हो सकते हैं, they are typically distributed and work more in a peer-to-peer fashion. इसी में एज कंप्यूटिंग की हम बात करें तो it pushes the computing application away from centralized node to exactly on the network edge. ठीक है, ताकि आपकी एनालिटिक्स या जो कोई भी नॉलेज जनरेशन है इट शुड बी परफॉर्म नियर टू द डेटा. और कोई एक मैंने पहले भी बात की, कोई यूनिक डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉग और एज के एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जनरल जो डिफरेंशिएशन हम कह रहे हैं वो यही है कि एज कंप्यूटिंग इज जनरली परफॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन टू द एज और नियर टू द एज, whereas fog can be performed anywhere. So it covers wide range of technologies and services. हमने पहले भी कुछ बात की, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आर वाइडली बीइंग यूज्ड, मोबाइल डेटा एक्विजिशन है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं, क्लाउडलेट्स है, मोबाइल एज कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेजेस हैं, रिमोट क्लाउड सर्विसेज हैं, ऑटोनॉमिक सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, IoT है, एटसेट्रा. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये इंपॉर्टेंट है अगर हम कंपैरिजन देखें cloud computing and fog computing का, what is the difference? 1 minute. If you see the difference,
So with the perspective of different features, cloud computing, hardware जो है cloud computing there is a huge size of hardware available. काफी ज़्यादा bulk में hardware available होता है. Fog computing के अंदर the computation capability, infrastructure capabilities, they are really very limited. Yes, they are better than the end device, but they are limited. So we do have limited storage, limited computation power, limited network connectivity, protocols, etc. ठीक है तो उसमें limitation. सर्विस टाइप्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इट कलेक्ट्स जनरली इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरली फ्रॉम एनीवेयर, इट्स कलेक्टिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है. वर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग नोड्स में जनरली कॉन्टेक्स्ट बड़ा लिमिटेड होता है कि उसके करीबी कहीं जो लगे हुए हैं सेंसर्स लगे या जो डिवाइसेस लगे हैं उन्हीं से कलेक्ट कर रहा होता है, हर जगह से नहीं. सर्विस एक्सेस जो है इट्स डन थ्रू द कोर इन क्लाउड कंप्यूटिंग. वो जो पूरा एक कंप्यूटिंग कोर है उसके अंदर आप कंप्यूटेशन करते हैं. वेयरएज फॉग कंप्यूटिंग के अंदर यू डू द कंप्यूटेशन एट द एज या ऑन द डिवाइस यू डू दिस कंप्यूटेशन. वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लाउड के अंदर यू हैव अ ह्यूज लार्ज स्केल बिल्डिंग. टिपिकल एक वेयरहाउस टाइप की आपकी बिल्डिंग होती है, स्मॉल और वेरी वेरी लार्ज, और विद द कूलिंग एंड एवरी स्टफ. Whereas for computing and it can be anywhere, and it's a small scale. It can be inside a small box, or it can be in a container, maybe maximum, or it can be inside a building, or it can be outdoor. क्योंकि बाहर भी हो सकता है और inside भी हो सकता है और एक छोटे से बॉक्स में भी हो सकता है. डिप्लॉयमेंट जो है क्लाउड की वो सेंट्रलाइज्ड है और कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा होता है, जबकि फॉग कंप्यूटिंग जो है इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड बट जनरली इट्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड और लोकल जो है मल्टीपल लोग जो है वो उसको कर रहे होते हैं एंड दे नीड टू हैव कंफर्मिटी टू ईच अदर. सर्वर नोड लोकेशन जो है वो विद इन द इंटरनेट है और फॉग कंप्यूटिंग में जो है वो एट द एज ऑफ लोकल नेटवर्क है, बट नॉट नेसेसरी. It may be on the internet as well. ठीक है, इंटरनेट पे भी हो सकता है, but generally it's the at the edge of local network between mostly कह लें at the convergence point of local network and public network. जैसे हमारा राउटर है, so that is the ideal for computing device की जो कि convergence point होता है of local and public network. Client and server distance जो है cloud में it's जनरली मल्टीपल हॉप्स, बहुत सारे हॉप्स के बाद आप पहुंचते हैं, लेकिन जो फॉग कंप्यूटिंग है इट्स जनरली विद इन अ सिंगल हॉप. इट मे बी ऑन मल्टीपल हॉप, जैसे वो मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे किसी के डेटा सेंटर में या सिटी के किसी डेटा सेंटर में, बट जनरली इट्स विद इन अ सिंगल हॉप डायरेक्टली एक्सेसिबल. Latency in cloud environment is very high, and this is the primary reason why we do have fog. In case of a fog, it's very low. Because the latency is the high, that's why the jitter, you have got delay jitter, particularly if we talk about a multimedia application or a real-time application, it's quite high in cloud, whereas in fog computing it's low. Security की बात करें तो cloud computing में we do not have any control over the security of cloud. It's been provided by the cloud platform, so it's not locally controllable. Whereas in fog computing, it may be locally controllable. Mobility की support generally cloud computing में बहुत कम होती है. Whereas in the case of fog computing, yes, it gives you a very good mobility support जो generally उसके साथ होती है. Access की बात करें तो cloud platforms जो हैं they are fixed or can be wireless. फॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स आर मोस्टली वायरलेस. ठीक है, वो जो है आपके वायरलेस ही उसका एक्सेस करेंगे. कंट्रोल जो है क्लाउड का इट्स सेंट्रलाइज्ड, और एक सेंट्रलाइज्ड एक कोई क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो आपको देता है. whereas in the case of fog computing it's generally distributed and you do have partial control. लोकेशन अवेयरनेस की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर you generally do not have any location awareness. फॉग कंप्यूटिंग के अंदर अक्सर केसेस में आपको लोकेशन अवेयरनेस मिल रही है बिकॉज यू नीड इट. आपकी लोकेशन अवेयरनेस ही बताती है कि ऐसे करीबी जो नोड है वो कौन सा है और कहाँ से ये डेटा है. इवेंचुअली जब वो सेंट्रलाइज्ड उन पे भी जा रहा है
तो पता ये लगना चाहिए ना कि जी कहाँ से डेटा आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, कौन सा सेंसर है, किस जगह पे लगा हुआ है, तो उसकी बेसिस के ऊपर बिकॉज यू हैव टू मेक द डिसीजंस फॉर दिस रीजन यू हैव लोकेशन. Then vulnerability में for in terms of connectivity, जो cloud computing है, it has high probability because it's far. जो fog computing है, उसमें disconnection और जो computation में खराब होने की vulnerability है, it's very low. This comes more in case of interactive application. ये उसके लिए vulnerability की बात की जा रही है. जो interactive है, जैसे real time की हमने बात की थी, या कोई भी interactive application है, तो cloud में because it's far, there are more chances of losing the internet connectivity as well. As in the fog computing is generally within a single hop, probably within the edge of your local area network, so the vulnerability is very, very low. Geographical distribution जो cloud की वो centralized ही होती है. Fog computing की distributed होती है और it's generally highly distributed. Number of server nodes, like how you do see the cloud computing as individual things, it's very few. It does not mean कि जी cloud के ऊपर computation nodes या computation server कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं cloud computing से. But with this perspective here, it means कि जो आप देख सकते हैं कि जी अच्छा जी server node कहाँ है, ये किधर है, तो वो आपके पास जो है ना बड़े कम ऑप्शन होते हैं. आप कहते हैं कि ये इस क्लाउड पे चलाओ, तो आपके लिए पूरा जो डेटा सेंटर है इट्स लाइक वन सर्वर. जबकि फॉग कंप्यूटिंग के अंदर मल्टीपल होते हैं. आपको पता लग रहा है चलिए मैं आप इधर से मोबिलिटी तो जहाँ पे था, अब इस जगह हो गया, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, अब इधर इस तरह का. रियल टाइम इंटरेक्शन मैंने क्लाउड पे दे आर नॉट फुली सपोर्टेड, और अगर है भी तो बहुत अच्छी सपोर्ट उतनी आइडियल नहीं मिलती. लेकिन फॉग कंप्यूटिंग में इट्स मच बेटर देन क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपकी कनेक्टिविटी है जनरली इट्स थ्रू लीज लाइन, it can be through wireless as well, or far corner mostly it's wireless. Cloud computing के अंदर availability it's 99.99%. अक्सर आपको गारंटी करते हैं 99.95%. लेकिन cloud computing के अंदर yes it's generally been guaranteed. Content generator जो cloud computing के अंदर it's humans, it can be machines, it can be devices, but in fog computing mostly it's the devices are the sensors. ठीक है, automated तरीके से ज्यादा आपका कंटेंट जनरेशन हो रही है, उनके लिए आप फॉग कंप्यूटिंग यूज करते हैं. ये नहीं होता कि आपने कंप्यूटेशन करनी है तो आप अपनी कंप्यूटेशन वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो आप वो अपनी फॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर हैं. कंटेंट जनरेशन जो होती है, जो भी हो रही है, इट्स जनरली डन ऑन सम सेंट्रल लोकेशन, वेयर इन द फॉग कंप्यूटिंग इट कैन बी डन एनीवेयर. और कंटेंट कंजम्पशन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगेन इट्स बीन डन by the end devices, whereas in the fog computing it can be anywhere. और virtual infrastructure जो है वो cloud के अंदर बड़े centralized enterprise servers होते हैं, जबकि fog computing के अंदर even you can have user device like आपका जो user का mobile phone है, that is like a fog or edge device. ठीक है, this is an edge computing platform. तो बहुत सारी computation जो it can done itself. It consists of a lot of sensors और साथ ही ये प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है. तो ये जो स्मार्टफोन्स हैं they are really very ideal candidate to perform the edge computing. Okay, so if you talk about the fog or edge computing application areas, so there are a lot of areas जहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं. और मेनली वही है कि जहाँ पे IoT आपकी आ रही है, IoT is doing some sort of active communication or interaction with the cloud platform, so we are going to use it. For example, we talk about the vehicular area network, or connected vehicles, or smart vehicles, or smart traffic systems, like then smart grids, smart cities, wireless sensor networks. Even we can use them in the agriculture as well, जहाँ पे हमें real time interaction चाहिए. फॉग कंप्यूटिंग के बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हमारे एप्लीकेशन एरियाज हो सकते हैं, और वट एवर दे आर गोइंग टू बी, उसमें दो चीज़ें हमने देखनी होंगी. एक उनका डेटा प्लान है, दी अदर वन कंट्रोल प्लान की आपको पता है होते ही हैं. और डेटा प्लान जो है जनरली डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा, और कंट्रोल जो है वो देखता है आपकी जो कनेक्टिविटी है, एक्सेस है, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ कनेक्शन एंड ऑल दिस. और सो डेटा प्लान में आपकी जो भी एप्लीकेशन है जो जिनका कॉन्टेक्स्ट डेटा का होगा, दे आर गोइंग टू
विद इन डेटा प्लान और जो आपका कंट्रोल प्लान है वो आपकी नेटवर्क एक्सेस की हैं, रेडियो नेटवर्क्स हैं, और द टॉप कंटेंट मैनेजमेंट है, उनकी कनेक्टिविटी है, उनकी स्ट्रीमिंग है, ये सारी जो है आपकी कंट्रोल प्लान प्लान whatever you are going to use, one of the major thing is going to be your connectivity, जो कि आपकी with the help of some typically with some sort of mobile telephony या उसके through हो रही होगी. Data plane में होगा तो data plane में इसी तरह you are going to have some sort of माइक्रो क्लाउड्स और क्लाउडलेट्स जिसके ऊपर आप डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, इसी तरह आपकी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होगी, अगेन उसके अंदर if you are doing some sort of data processing that is going to be data. अगर हम इसी तरह और तो टॉप नेटवर्क्स की बात करें उसमें ज्यादातर जो आपके नेटवर्क स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स जहाँ पे स्ट्रीमिंग की हम बात करते हैं particularly जिस तरह वीडियो स्ट्रीमिंग है, so they are a very good candidate for azure for networks as well. For example ये surveillance cameras हैं अगर उनकी हम बात करें और we are getting the information that they are doing some sort of a detection, doing surveillance, and they are sending this thing to nearby cloud platform, sorry fog platform, और उस fog के ऊपर जो आप उसको process कर रहे हैं, you are sending the data back. इसी तरह आपका क्लाइंट बेस हेडनेट्स हो सकते हैं, हेडनेट्स होते हैं जैसे आपके हेटेरोजेनियस नेटवर्क्स होते हैं और टिपिकली आपका जो हेडनेट्स नेट्स हैं उनके अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द नेटवर्क्स इट गेट्स चेंज मोस्टली आपका मोबाइल के अंदर होता है, जैसे यू आर कनेक्टिंग through a LTE network or you are connected to a Wi-Fi network and probably to a Bluetooth network as well. So you can have a variety of types of connectivity as well. इसी तरह आपका क्राउड सेंसिंग आईटी स्टेट्स हो सकती हैं फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट डिवाइसेस हैं व्हिच आर collecting data, doing some sort of a data processing, performing some sort of actions, और उसके अंदर you are doing some sort of measurements. For example, you are measuring the quality of signals, so you are doing reference signal quality, उसी का वैसा आपकी जो आपका होता है उसको आप measure कर रहे हैं, or you're doing some probing, or you're creating some sort of analytics or histograms or something. So उसके लिए you can use this. Then client controlled cloud storages में आप use कर सकते हैं, जिसमें जो आपकी जो storage है that is client controlled. तो cloud जो है वो तो आपको exactly पूरी इसके flexibility नहीं देता. What you can do is you can have the storage available in the fog network या fog platform, जहाँ पे आपका जो client है उसकी permission है और client can actually mutate the storages का. अब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिसमें प्राइवेसी की यहाँ पे बात की है, यू कैन स्प्रेड द बाइट्स ऑफ अ गिवन फाइल इन अ क्लाइंट शिमलेट अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर. तो जिसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जी इवन जो बिट बाय बिट डेटा है यू आर स्टोरिंग इट ऑन टू मल्टीपल फॉग नेटवर्क्स और सॉरी फॉग प्लेटफॉर्म्स, और वहां से आगे आप उसको पॉसिबली आप क्लाउड के ऊपर स्टोर कर रहे हैं. तो जब ये उस फॉग के ऊपर स्टोर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट जो एक डेटा बिट है इट डज नॉट मीन anything. तो आप उसको मल्टीपल पे जब स्प्रेड करते हैं टुगेदर यू एग्रीगेट दैट टुगेदर देन इट मेक्स सम सेंस. तो इस तरीके से इवन यू कैन इंश्योर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. Then you can have sharing of your bandwidth or resources with your neighbors as well, or in which your terminal device can ask the neighbor to share their LTE or Wi-Fi networks as well, or file जितना आप से नहीं कोई सेव करनी है या कोई आपने रिट्रीव करनी है, so you can have it as well. इसी तरह अगर आपको याद हो एक माने वो मल्टीकास्ट राउटर्स का कॉन्सेप्ट आया था, you can even utilize it for that as well, जिसमें मल्टीकास्ट में था कि you send one packet to the multicast router और उसके बाद वो ब्रॉडकास्ट होते थे. So even you can have the similar type of thing here as well, कि आपका वो जो वो जो fog node है it's having the data stored as one and then it's distributing that data from that fog node to the end devices. तो वो मल्टीपल को जो आगे एक्सेस हो रहा है, लेकिन फ्रॉम दैट फॉग हर कोई जो वो उस क्लाउड को लेदा एक्सेस नहीं कर रहा. और you can do even the bandwidth management at your जो फॉग कंप्यूटिंग नोड है या जो गेटवे है, और उसमें वही है कि आपके जो होम सेट टॉप बॉक्स हो सकते हैं,
आपके होम के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी राउटर्स हैं वो हो सकते हैं. सो दे कैन डू द बैंडविड्थ मैनेजमेंट ताकि आपके जो यूजर्स हैं जो compete कर रहे हैं वो उसमें अप्रोप्रिएटली compete कर सकें. ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जो हमारी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट की है. स्मार्ट ट्रैफिक लाइट की जिसमें हमने बात की कि जी हमारे गोल्स और फंक्शंस क्या हैं. स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स हैं विच आर कनेक्टेड विद एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. और मेजर फंक्शनैलिटी क्या है जी कि कुछ लोकल है कुछ ग्लोबल है कुछ मजीद ग्लोबल है. तो मेजर फंक्शनैलिटी में जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन थी वो क्वाइट लोकल वहीं पे चाहिए. और यस एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो उनका डेटा तो या प्रिवेंशन होती है तो उनका डेटा जरूर भेजना हमने क्लाउड पर. लेकिन एक्सीडेंट को रोकना जो है दैट इज अ local activity it should be done in real time. So obviously it's going to require a fog computing platform. Then there is global connectivity जो कि near में आपको चाहिए. So that is for traffic management. Again, you may do it on the fog network, and if the cloud is not far, you may be able to do it on the cloud as well. And then you have non-real time. जैसे हमने बात की थी analytics करनी है, तो evaluation करनी है for system improvement. It does not require any real time response, so you can do it over the cloud platform. तो ये सारा हमने देख लिया हुआ है. So where you are going to deploy it, you are going to deploy it on each intersection जो भी आपका चौराहा होगा, you are going to deploy it there. और वहाँ पे जो आपके sensors होंगे they are going to send this information to this fog node जो कि वहाँ पे deploy होगा. बेशुमार examples हैं. You can have wind farms, you can have smart homes, you can have smart cities, you can have traffic connection system, you can have connect pipelines, you can have smart vehicles, etc. तो बहुत सारे आपकी इसकी use cases हो सकते हैं. Architecture की बात करें fog computing की, there is no single standardized architecture for fog computing. Cisco ने जो एक proposed type का अपना perspective बताया था for the fog, so they divided it into almost 4 layers. So at the first layer, they say there is the data center or the cloud, which is hosting uh, the data which is coming from there. और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे का सारा डेटा आता है. मे बी सेंडिंग ओनली सम डेटा ओवर हियर. बाकी जो वहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है onto the fog nodes. और दूसरा मेनली इसको पर्पस क्या है, यू आर डूइंग सम IoT एनालिटिक्स. देन देयर इज कोर जो कोर नेटवर्क है जिसके थ्रू आप जो है एक्चुअली फॉग के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो फॉग इज एक्चुअली स्प्रेड ऑल अक्रॉस. ठीक है, जो आपका फॉग है पूरे का पूरा वो ये सारे के सारे इसके ऑल अक्रॉस स्प्रेड. और सो यू आर गोइंग टू हैव फर्स्ट द कोर जिसमें आपका आईपी या जो एमपीएलएस बेस्ड कनेक्टिविटी होती है. टिपिकली जो आपका टेलीकॉम होता है उसमें एमपीएलएस बेस्ड आपकी कनेक्टिविटी होती है जिसमें आपका जो रादर देन वो जो राउटिंग आप करते हैं आईपी एड्रेस के बेस पे उसकी बजाय डायरेक्टली आपको नाउन होते हैं कि जी से सोर्स पे होके जाना है, तो वो पहले से नाउन होते हैं फॉर फास्टर कनेक्टिविटी. तो वो यूज किए जाते हैं. देन यू कैन हैव मल्टी सर्विस एज एज वेल. सो यू आर गोइंग टू हैव दीज एज प्लेटफॉर्म्स और इवेंचुअली यू आर गोइंग टू हैव एंड सेंसर्स. तो वो आपके सेंसर्स होते हैं जो कि काफी सारे सेंसर्स available होंगे, so they can have their own mesh or their own network. They are going to be connected through this edge or variety of edge devices, which are eventually going to be connected through this core network to the data center. So जो आपकी एजुकेशन है that give you location awareness and very low latency. It provides you also geographical distribution as well. You are going to have a large scale sensor networks to monitor the environment and the smart grids as well. और काफी सारे नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपके. मोबिलिटी सपोर्ट आपकी मौजूद है. रियल टाइम इंटरेक्शन है. हेट्रोजीनिटी है. इंटरऑपरेबिलिटी है. फेडरेशन आपको चाहिए. फेडरेशन तभी होगी अगर इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन प्लेस होंगे. अगर वो नहीं होंगे सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड फेडरेशन. फेडरेशन तभी हो सकती है जब आपकी इंटरऑपरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी की आपको सपोर्ट मिलती है. फॉग एंड बिग डेटा की बात करें तो वो हमने जैसे पहले बात की कि जी बिग डेटा इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय वॉल्यूम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी या वैरायटी. But fog because of this IoT connectivity brings a new challenge of geo distribution. So
If you are sensing something from here and you're sending it to the cloud, so towards the cloud is going to be very high latency, and towards the fog it's going to be very low latency. You can have multi-layers as well. So this is sensing the data, and whatever data it's sensing, it's storing over here in a nearby database, so or a data storage area. So you have an operation, non-operation data stored over here, and for example, you are having machine-to-machine protection and control system. Then this data has been processed, और यहाँ तक जो है जो connectivity it's millisecond to sub seconds, and then it sends the data. This data has been processed with some medium speed or medium latency real-time analytics, which are actually visualization systems and processes. So it processes this data and stores this historical data. Then this historical data has been processed for transactional analytics, for long-term analytics, for trends, and eventually it's been stored in business data repository where the business intelligence it performs operations. So इनके ऊपर जो data जो operations होंगे they are going to take days to the months, यहाँ पे minutes to the days है, यहाँ पे seconds to the minutes है. So typically the data which you are going to store for the business intelligence is going to be stored onto the cloud. Rest of the data can be stored somewhere in between, can be erased as well. But not necessarily it always depends upon the application area, which application area you are going to use it. तो ये depend कर रहा होता है हमेशा इस चीज पे. फ्यूचर स्मार्ट सिटीज का अगर हम देखें तो उसके अंदर इसका आर्किटेक्चर भी इसी तरह होगा. यू कैन हैव these four layers where you have the cloud data center, or so it's going to be city-wide access, or at the end side you are going to have these sensors. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्मार्ट सिटी का है, it's going to consist of smart buildings, smart traffic, smart pipeline monitoring. So it's going to consist of many other smart systems. So multiple smart systems will be one way on this. So the and four layer is going to be the sensing layer and the sensing networks, which is actually getting the data, gathering the data, and latency is going to be in a few milliseconds. Then it's going to send it to the edge computing nodes, जो कि वहाँ पे connected होंगे. Any anomaly, any problem, any disaster is going to be immediately reported and responded as well. Anomaly के केस में तो फौरन response होगा, उसके ऊपर corrective actions भी लिए जाएंगे. So it's going to be within few seconds, and then you are going to probably have some intermediate nodes as well, जो कि आपके कोई hazardous event के केस में inform कर देंगे. Let's say there is a fire somewhere, तो यहाँ पे जो है ये तो अगर फायर के केस को फौरन से आपने एक्चुएटर को एक ऑन करना है, आपने फिर वाटर का आपका वो सिस्टम लगा हुआ था जो कि ड्रॉप होता था बिल्डिंग में, तो वो ये उसको ऑन कर देगा और साथ ही यहाँ पे सिस्टम में इनपुट कर देगा जो कि एक फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा. तो वो इमीडिएट मैसेज यहाँ पे हो जाएंगे और फायर डिपार्टमेंट के लिए ये वाला होगा. एंड देन यू आर गोइंग टू हैव सम एनालिटिक्स और अदर थिंग्स बेस्ड ऑन टू दिस थिंग कि जैसे जिस एरिया में ज्यादा आग लगती है, इस मौसम में ज्यादा लगती है, फलाना ये होता है, इस कम्युनिटी में ज्यादा लगती है, सो दिस इज गोइंग टू बी our here. तो इस तरीके से you can have future smart city. So you do have a radical distribution of this FC architecture. So you can see there are four layers. So the layer 4 जो हमारी सबसे यहाँ पे आ जाती है to the end device, that is the sensing layer. So it consists of sensing networks. So it has very low latency, highly reliable, low cost, and consists of a lot of sensory nodes. And then there are edge computing nodes, which also has very low latency, respond to immediate requirements, real-time requirements, immediately इसको respond करते हैं. Then we may have intermediate nodes, और जो कि थोड़े से delayed latency के साथ जो है वो काम करते हैं. And then we are going to have cloud computing data centers. इसी तरह हम बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूटेड IoT और या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग एप्लीकेशंस के onto the infrastructure. So again, you can have the similar type of model जो Cisco वाला है. You do have embedded systems and sensors. तो आपकी ये एक application area है, ये पूरा application area है. So the A application area is going to have the endpoint for application, A application where you are going to have your embedded systems और sensors हैं, तो वो sensors जो है वो sense करते हैं, and on these embedded system you may have some app along with some OS. Then they send it on to the fog environment. So in this fog environment it gets processed
और मजीद डेटा अगर भेजना है वो करना है, so through this core network to send it to the cloud as well. So where the application A is actually hosted, so there it performs the operation. So वो सारे cloud based operation वहाँ पे होंगे. सो जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आपको चाहिए वो वही कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड नेटवर्क्स हैं, और इनके थ्रू जो है आप ये काम कर रहे होंगे. सो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं. जैसे यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम एंड सेंसर्स की बात की, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन और ये ओएसपी यहाँ पे जो हम एम्बेडेड सिस्टम कह रहे थे तो इसके इनमें है. अदरवाइज यू आर गोइंग टू हैव सेंसर्स ओवर हियर, you are going to send all this thing over here into the fog. Yes, on the fog you are going to need this thing application, and to run these applications you are going to need computing storage and network. ठीक है, वो फिर आप तभी काम कर सकेंगे. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात करें हम, तो अब वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हो सकते हैं. तो ये अब एक और डिपिक्शन है. सो इन दिस you can see there is an abstraction layer for the compute network and storage. So this abstraction layer make them virtualized. Then you have an orchestration layer through which you do have a variety of types of orchestration things done, like you are having an analysis, plan, execute, and coding, and you have data API through which you are accessing the data and you are doing the messaging as well. Then you have IoT or IO verticals, like you can have application areas of healthcare, smart grids, of industrial automation, etc. So you do have generally heterogeneous physical resources, because fog computing nodes are heterogeneous. They are being manufactured by different manufacturers. There's a huge range available, different servers, different routers, different sensors, different applications. So you are going to have a lot of diversity and heterogeneity into this. So for same goes for the network as well. So the network infrastructure is also heterogeneous. You're going to have 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, etc. So you need to have abstraction layer on top of that. Okay. So still you are going to have an fog abstraction layer. So what the fog abstraction layer does, it hides the platform heterogeneity. Okay. So ये model एक है, it's not much trend-wise as of now, but yes, with the fog abstraction layer, we are going to have the platform heterogeneity and going to bring some standardized interface, some uniform interface, so that the resource management is going to be very very easy. और जब भी आप ये जेनेरिक एपीआई प्रोवाइड करेंगे तभी आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप मल्टीपल हेटेरोजेनिटी की जो वो सपोर्ट दे सकें. तो आप मल्टीपल हाइपरवाइजर्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल नेटवर्क्स को, मल्टीपल कनेक्टिविटीज को, सेंसर्स को, प्लेटफॉर्म्स को तभी हैंडल कर सकेंगे देयर इज सम जेनेरिक एपीआईज एंड स्टैंडर्डाइजेशन. Or then you can have specific multi-tenancy feature as well, to which you can do this data and resource isolation, and they need to be isolated. आपका जो डेटा है और जो आपके रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो डेटा जहाँ पे रिजाइड कर रहा है, that needs to be different, और जो रिसोर्सेज आपके जहाँ जहाँ जो नोड्स हैं they are going to be different. So then you can have a multi-tenancy as well. फॉग सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर की बात करें तो इट्स वन ऑफ द मेजर लेयर जो अभी आपने देखी. इट प्रोवाइड्स यू डायनेमिक पॉलिसी बेस्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ फॉग सर्विसेज. और ऑर्केस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी जो है ये बेसिकली जितने भी आपके इसके ऊपर काम होने हैं, जहाँ जहाँ से डेटा आना है, जो एप्लीकेशन परफॉर्म करना है, प्रोसेसिंग करनी है, ये सारा काम जो फॉग ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो उसको मैनेज कर रही है. अब इसके अंदर एक मेजर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या एजेंट होता है जिस कॉल्ड फॉगलेट. तो फॉगलेट जो है ये मेन जो आपकी फंक्शनैलिटी ऑर्केस्ट्रेशन की वो करते हैं आपको देता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ परसिस्टेंट स्टोरेज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सो ऑल अक्रॉस जो आपका डेटा आ रहा होता है तो इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एज वेल. और इसी तरह उसके साथ आपने देखे स्केलेबल मैसेजिंग बस है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज बस है, इसके थ्रू इट डज द कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल फॉग प्लेटफॉर्म. ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉग ऑर्केस्ट्रेशन. देन यू हैव अ फॉग सॉफ्टवेयर एजेंट. और फॉग सॉफ्टवेयर एजेंट जो है आपका ये मेनली आपका फ्रेमवर्क है जो कि आपके हर फॉग प्लेटफॉर्म का डिजाइन करता है. और जो फॉग एब्स्ट्रैक्शन लेयर है तो उसको ये मेनली ये यूज कर रहा होता है. और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है अक्रॉस मल्टीपल फॉग प्लेटफॉर्म्स, इट्स बीन डन थ्रू द फॉगलेट सॉफ्टवेयर. तो फॉगलेट का सबसे मेजर कंपोनेंट है.
देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसी तरह जब आपका वो डेटा आ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड। अब उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो रहे हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी रिसोर्सेज उसके साथ एंगेज है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, तो आपने जब भी उस फॉग के ऊपर कोई इंटरेक्शन प्रोवाइड करनी है, दिस इज परफॉर्म करनी है, इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू दैट and it increases for scalability and fault tolerance as well. Let's say if there is a failure in one fog component, it may migrate your computation to another fog platform और वहाँ के पे इसकी जो computation है वो कर रहा है। अब ये जो database है, it contains the metadata information for all the resources, for all the tasks and for each and everything जो भी आप उसके ऊपर perform कर रहे थे, ये सारा metadata की फॉर्म में उसके ऊपर स्टोर होगा। इसी तरह दे डू हैव अ पॉलिसी बेस्ड, वो जो हमने सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन की बात की, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन पॉलिसीज। तो वो एवरी फॉग आर्किटेक्चर नीड्स टू हैव अ पॉलिसी बेस्ड सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। ये जो सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, दिस इज गोइंग टू टेल कि आपने उसकी रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, राउटिंग कैसे करनी है, और हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैनेज, तो किस केस में क्या करना है। उसकी एग्जांपल क्या है जी पॉलिसीज की। कोई भी लोड बैलेंसिंग करनी है तो उसका थ्रेशोल्ड क्या होंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, पावर मैनेजमेंट की क्या है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, सो ये जो पॉलिसीज है दे आर पोस्टेड इनटू अ पॉलिसी डेटाबेस, वो भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इस पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए देयर इज अ पॉलिसी मैनेजर। तो जब भी कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट आती है, उसको चेक किया जाता है कि वेदर इट कंफर्म्स टू द स्पेसिफिक पॉलिसी और नॉट। तो जब भी वो आई, उसके लिए उस पॉलिसी डीडी से देखा जाता है कि जिस सर्विस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी क्या, वेदर वी आर गोइंग टू सर्व इट और नॉट। और वो जो भी रिक्वेस्ट से रिलेटेड या जो भी इंस्टेंस से रिलेटेड अपना मेटा डेटा, उसकी बेसिस पे देखा जाएगा वेदर इट्स अलाउड और नॉट, हाउ मच अलाउड, कितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी होनी चाहिए, कितनी दी जा रही, ये सारी चीजें उसके बेस पे देखी जाती हैं। एक और एग्जांपल केस है ये, दिस इज फ्रॉम सिस्को। सिस्को ने बेसिकली एज प्लेटफॉर्म बाकायदा वो दे रही, उसमें अब तो काफी मल्टीपल, पहले दो थे, फाउंड आउट के जो चार पांच छह किस्म के प्लेटफॉर्म्स उन्होंने दे दी हैं। सो सिस्को आईओएस जो है, दिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ, आपको पता है सिस्को का आईओएस जो राउटिंग सॉफ्टवेयर है, एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, सो दे मेड इट फॉर फॉग प्लेटफॉर्म्स। तो फॉग प्लेटफॉर्म के जब आपने जब भी कंप्यूटेशन करनी है तो सिस्को गिव्स यू फॉग प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बने बनाए आपके प्लेटफॉर्म्स हैं which are bundled with some routing capabilities as well, और इनके ऊपर they actually run this iOS applications, iOS applications तो इसके थ्रू काम कर लेते हैं। Last is mobile edge computing. Mobile edge computing जो है, it provides IT and cloud capabilities within radio area networks in close proximity to mobile subscribers. ये जो हमने पहले भी बात की थी कि जी edge computing है, and if you make it in the context of wireless networks or radio access networks, so that is called mobile edge computing. So mobile edge computing जो है वो आपके कंटेंट्स, डेटा, सर्विसेज, एप्लीकेशंस, इनको इन अ वेरी रिस्पॉन्सिव वे आपको प्रोवाइड करते हैं। और मोबाइल एज कंप्यूटिंग के लिए भी मल्टीपल स्टैंडर्डाइजेशन एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं, जिसमें etsi है, 3GPP, ITU है, etsi की हमने पहले बात की, डेफिनेशन इज वेल। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स या मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इसकी टेक्सोनॉमी को देख सकते हैं मोबाइल एज कंप्यूटेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि प्रॉक्सिमिटी क्या है, डेंस ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लो लेटेंसी है, लोकेशन अवेयरनेस है, एंड नेटवर्क कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल एज कंप्यूटिंग। वो प्रॉक्सिमिटी में है और काफी ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेटेंसी इज वेरी लो, लोकेशन का पता होता है कौन सी टावर से कनेक्टेड है, कौन सी चीज कनेक्टेड है इन बोथ वे, और नेटवर्क कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन सा नेटवर्क है और क्या उस नेटवर्क की सुविधा है। देन एक्टर्स जो हैं, दे आर मेनी, एप्लीकेशन डेवलपर्स फॉर दैम, कंटेंट प्रोवाइडर, मोबाइल सब्सक्राइबर, और द टॉप प्लेयर्स हो सकते हैं आपके पर्टिकुलरली जो आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं,
Then you can have mobile edge computing service providers and software vendors or network equipment vendors. एक्सेस टेक्नोलॉजीज में दे आर मेन वाईफाई है, उसके अलावा ब्रॉडबैंड मोबाइल नेटवर्क्स हैं लाइक 3G 4G 5G, लेकिन वाईमैक्स का इस्तेमाल अब कम हो गया। ये पुराना कॉन्सेप्ट था जिसे हम कहते थे वायरलेस मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, तो जिसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपको एरिया जाता था ना, इट्स ऑल अक्रॉस वायरलेस बैंड ही है आपका जो 4G 5G है, सो इट्स लेस यूज एंड देन ब्लूटूथ applications both सारी हैं. You can have computational offloading, you can have collaborative computing, web content optimization, memory replication, content delivery, and many other like surveillance, all these smart application areas. Objectives क्या हैं? They are very important. Minimize the latency, minimize energy, minimize cost, maximize throughput, minimize radio utilization, and optimize computational resource. So आप में से कोई अगर interested भी और research करने में into mobile edge computing, so they have to keep these things in their mind. ये objectives हैं. What I want to achieve within this, मैं इनमें से किसको target करना चाहता हूँ. Computational platforms जो हैं से related they are cloud, mobile edge computing servers हैं and mobile nodes हैं, and key enablers क्या हैं जी, cloud and virtualization है, high volume servers हैं, network technologies हैं, software development kits हैं, and portable devices. Examples mobile edge computing के use case examples हैं जी, radio access network aware content optimization है, तो जो आप RAM यूज कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, आपके जिस तरीके की आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी आ रही है जिस तरीके से है उसके हिसाब से आप उसके एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करें और उसकी बेसिस के ऊपर आप नेटवर्क को भी ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। और उसकी एग्जांपल ये अभी भी जनरली क्लाउड बेस्ड में भी होता है, आपने देखा है जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग स्लो कनेक्शन, सो वीडियो उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाती है, कम पिक्सल पे जाती है, और अगर आपका नेटवर्क बेहतर हो सो इट बिकम्स मोर प्रॉपर. सो व्हाट it does the content optimization. So you have a mobile edge server, so typically it can be in an LTE based station. So these are the edge devices, और इनके लिए आपकी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यहाँ पे भी हो रही है, और दूसरी तरफ से आपका जो कोर नेटवर्क है उसके बाद जब आप क्लाउड में स्टोर करने जा रहे हैं तो वहां पे आपकी इसकी ऑप्टिमाइजेशन. Then Internet of Things, they generate a lot of messages on telecom networks, और उन मैसेजेस को उस डेटा को एग्रीगेट करना होता है और लो लेटेंसी, अक्सर रियल टाइम कैपेबिलिटीज चाहिए, यू डू हैव ग्रुप ऑफ सेंसर्स ताकि आपकी एफिशिएंट कनेक्टिविटी हो सके. सो वी डू हैव वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, सो दीज आर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू मोबाइल एज कंप्यूटिंग सर्वर, और यहाँ पे आप इसकी कंप्यूटेशन कर रहे हैं. They can be located inside your own home network, or can be mobile based. वीडियो एनालिटिक्स इसी तरह है कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा, और ये डेटा जो है ये सारा का सारा कलेक्ट हो रहा है, सो यू आर डूइंग इट्स एनालिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स onto your LTE base station where your MEC server is located. So this is a very ideal case. Because of this, जैसे मैंने कहा कि telco operators now they have started investing internationally. They have started investing into computing infrastructure, public computing infrastructure. तो वो जो क्लाउड वाले प्रोवाइडर्स थे उनकी जगह आप ये जो दे हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव क्लाउड टाइप सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ मोबाइल या एज कंप्यूटिंग की फॉर्म या फॉग कंप्यूटिंग की फॉर्म. ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट एंड डीएनएस कैशिंग आपकी हो सकती है इसके ऊपर. सो रादर देन गोइंग अगेन हियर दे आर डूइंग दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग हियर. इसमें वैसे तो डीएनएस की भी हो सकती है जैसे डोमेन सर्विस की, लेकिन एक और बड़ी अच्छी हो सकती है जो आपके कंटेंट डिलीवरी सीडीएन जिस तरह होते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट यही है. दे ब्रिंग इट नियर टू द एज रादर देन ब्रिंगिंग द थिंग्स फ्रॉम एक्चुअल डेटा सर्वर, तो आपको वो सीडीएन से मिल जाती है. तो यहाँ भी ये है कि वो सीडीएन वाला ही काम है कि यू कैन स्टोर द थिंग्स हियर. जैसे भी मैंने कहा फॉर एग्जांपल समथिंग इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान, और आपका लेट्स से जिस तरह नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स द पीपल दे आर ब्राउजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स,
तो नेटफ्लिक्स में आप देखते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग, तो वो ट्रेंडिंग जो है वो टीवी शो जो है यू कैन हैव इट स्टोर्ड अवे हियर, तो यहाँ से वो फिर लोकली जो है उस एरिया में जितने भी लोग होंगे इट्स गोइंग टू बी स्ट्रीम फ्रॉम हियर रादर देन फ्रॉम द एक्चुअल सर्वर। और उसका डेटा जो होता है वो आपको पता है स्टैटिक होता है, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। तो एपिसोड 3 ऑफ सीजन 5 इज गोइंग टू बी सिमिलर, तो उसमें कोई चेंज भी नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड हियर और यहाँ से वो डिलीवर होगा। इसी तरह यू कैन हैव ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट डिलीवरी एज वेल। तो कोई ऑगमेंटेड रियलिटी की है, जनरली ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन रिक्वायर वेरी गुड क्वालिटी of service and eventually quality of experience of customer, this QAE. So generally real time ट्रैफिक जो है वो आपकी वो जो आपका जो पूरा जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है इट नीड्स टू बी वेरी क्विक, रियल टाइम में चाहिए होता है, सो इट्स गोइंग टू बी प्रोसेस्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आप उसको प्रोसेस करेंगे एंड इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंडिंग दिस डेटा टू द सर्विस, तो आप उसको सर्विस पे भेज देंगे, लेकिन मेन प्रोसेसिंग आप यहाँ पे करेंगे। इसी तरह एप्लीकेशन अवेयर सेल सेल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं। ये जो आपके मोबाइल सेल्स हैं जो जैसे बेस स्टेशन हैं, तो ये सेल्स हैं, so you can have their optimization based on the application कि किस तरह की एप्लीकेशन है, उनकी बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोकली उन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। पॉसिबल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, मल्टीपल उसमें आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दिस इज टुवर्ड्स द कोर नेटवर्क, व्हाट यू कैन डू इज आप इसे जो एल टी मैक्रो बेस स्टेशन की एन बी होती है उसके अंदर आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं उस सर्वर को, और आप उसे सेल एग्रीगेशन साइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल सेल साइट्स लगी होती हैं उन्हें जहाँ पे एग्रीगेट किया जाता है वहां पे आप उसे कर सकते हैं, या आप जो रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर साइट लगी होती है जहाँ पे मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट किया जाता है उस पे करते हैं। जैसे लाहौर जैसे सिटी में ये सारी होती हैं आपका लोकल, वो भी लगे हुए बेस स्टेशन भी। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन माय होम, सो आई डू हैव एन एक्सेस टू मल्टीपल कनेक्टिविटी, मल्टीपल साइट कनेक्टिविटी जो सबसे स्ट्रांग होती है उससे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। then those sites are connected to some cell aggregation sites जो कि multiple sites को connect करी होती है, and those cell aggregation sites are actually connected to the radio network, तो उसके अंदर भी आप इसको होस्ट कर सकते हैं। so it depends upon कि जी आप कहाँ पे इसको होस्ट करना चाहते हैं। जहाँ पे जितना यहाँ पे होस्ट करेंगे towards this side, so this is going to give you the best latency, यहाँ पे latency आपकी कम से कम है, ठीक है। मोबाइल एज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एक यहाँ पे डिफाइन किया है अगेन, और इट्स बाय द एटसी, जो कि एटसी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से डिफाइन किया है। मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं दे आर टू लेयर्स, एक मोबाइल एज होस्ट लेवल की है और दूसरी मोबाइल एज सिस्टम लेवल की लेयर। इसमें आपका मोबाइल एज होस्ट है, दिस इज द मोबाइल एज होस्ट, and then there can be other mobile edge platform and the edge host as well. So here we do have one mobile edge platform, so which consists of which is inside your mobile edge host, और इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए भी do have a mobile edge platform manager. So you can have multiple mobile edges, अगर मल्टीपल मोबाइल मोबाइल होस्ट होंगे तो मोबाइल एज प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू मैनेज देम, तो मल्टीपल इसी तरह जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको मैनेज करेगा। सो इट्स गोइंग टू हैव अ मोबाइल एज एप्लीकेशन रूल्स एंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म एलिमेंट मैनेजमेंट, एप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की सारी कैपेबिलिटीज के पास है। whenever there is a request to host something onto a mobile edge host, it will send it to a mobile edge host. मोबाइल एज होस्ट के ऊपर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मोबाइल एज प्लेटफॉर्म। मोबाइल एज प्लेटफॉर्म जो है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि जैसे मेरे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है, मेरे पास डेटा रिपोजिटरीज कौन कौन सी हैं, सो इट्स गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ मोबाइल एज एप्लीकेशन, ठीक है, अलोंग विद द डेटा, ठीक है, या स्टोरेज। सो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी सर्विस रजिस्ट्री में अवेलेबल है कि ये सर्विसेज ये एप्लीकेशन इट कैन एग्जीक्यूट। सो इट इट परफॉर्म्स दैट थिंग कि जी अच्छा जी कौन सी
एप्लीकेशन पे इन्वोक करना है और वहाँ पे इसको चलाना है, एंड इफ इट रिक्वायर्स टू हैव अ कम्युनिकेशन विद अदर मोबाइल एज प्लेटफॉर्म्स, तो ये वो भी कर सकता है। तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ये दूसरे होस्ट के साथ करेगा, और यहाँ पे जो है it's going to be managed by this mobile edge platform manager. तो मोबाइल एज प्लेटफॉर्म मैनेजर जो वो सारे के सारे आपके होस्ट और मेन्यू इनमें जो कोर कंपोनेंट है मोबाइल एज प्लेटफॉर्म उनको मैनेज करता है, उनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करता है। ये सारे जो मोबाइल एज प्लेटफॉर्म है, इनकी जो मेजर इनके ऊपर टास्क एलोकेशन करनी है या देनी है, असाइनमेंट करनी है, दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू मोबाइल एज ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, अब ये उनकी फिर सारी डेफिनेशन आ गई। मोबाइल एज एप्लीकेशन क्या करती है? सो इट्स एप्लीकेशन व्हिच इज इंस्टेंशिएटेड ऑन मोबाइल एज होस्ट। होस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर आपका मोबाइल एज ये पूरा का पूरा जो है दिस इज वन होस्ट, इसके ऊपर आप बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस को रन करते हैं। मोबाइल एज प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली इसी होस्ट को मैनेज करता है। मैनेजर जो है वो मल्टीपल होस्ट या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करता है। और मोबाइल एज सर्विस जो है वो जो भी एप्लीकेशन कोई सर्विस दे रही होती है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल एज सर्विस। और जो कलेक्शन है आपकी सारी की सारी पूरे के पूरे उसकी उसको मोबाइल एज सिस्टम कहा जाता है। और मोबाइल एज सिस्टम लेवल मैनेजमेंट जो है लेयर जो इस पूरे मोबाइल एज सिस्टम को मैनेज करता है। दैट्स ऑल। That's all for this module. Thanks for watching.